मेरी जिंदगी जो बनी है वो एक एक्चुअली आई फील इज अ चोजन लाइफ, जिसमें आई वेंट टू द आर्मी जस्ट टू गेट इंजर्ड, बिकॉज आफ्टर गेटिंग इंजर्ड द टाइप ऑफ लाइफ which Almighty is making me to live is generating so much of hope. So I don't want to be anything else now. I am just trying to generate hope by my actions. What I learned in the armed forces and in Sikhism, I am just trying to follow and generate hope for larger cause. I think the life of every soldier is dramatically and drastically changed by the training he undergoes and by the many years that he spends in service. There are many aspects, but I will tell you three in particular which strike me. I think first is the courage and tenacity which is way beyond the ordinary that develops through all the challenges that you face in training. Your officers who train you, they put you through the worst, and you come out stronger with every challenge that you face. So that courage is something that remains with you. It's not only a physical courage, it's a mental courage that you have for the rest of your life. Another thing that comes through very strongly is, I would say, the moral character. And this is things like integrity and loyalty. We have to remember that in service, as buddies, our lives depend on each other. And it's a huge characteristic to have this integrity and loyalty. And a third thing which I can say that has personally affected me through these generations is that when you join the army, you leave all the parochial things behind, of community, where you come from, religion, the whole world, everybody becomes your religion, You have a broad-mindedness. You don't just tolerate diversity, you actually celebrate it. And let me tell you that in my own family, over these three generations, we could find that our culture is completely changed because we have picked up the best from everywhere, the best of food, the best of clothing, even the language has changed. So that is, some of the biggest changes that you find when you are trained in the army, when you are part of this service family. जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं राजेंद्र सिंह नेगी, वो पार्सली साइटेड है। वो यहाँ पे NIPVD देहरादून, जिस इंस्टीट्यूट में मैं अभी हूँ, वहां पे काम कर रहे थे। उसी बीच यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थे वो रिटायर हो रहे थे, वो रिटायर हो चुके थे। तो इन्होंने देखा कि, और मैं स्पोर्ट्स में ही हूँ, उनको लगा कि ये भी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा निकला हुआ है, एक बार देख लेना, क्या आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हो आप। मैंने भरा, इंटरव्यू और एग्जाम्स हुए, मैं क्वालिफाई कर गया। तब मैंने टोटली ब्लाइंड देखे पहली बार, और उनके बीच बच्चे खासकर। और एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है, मैं गेट से क्रॉस हो रहा था, गेट से टकराया एक छोटा बच्चा। जैसे टकराया वो बोलता है, वो ये कौन आ गया, टूटा तो नहीं, ऐसे करके एक छोटा सा बच्चा। तो वो मुझे लगा कि यार इतना सारा हडल है और उसको इतना सिंपली ले रहा है ये बच्चा, बहुत बड़ी सीख दे रहा है। और मुझे कुछ अलग करना था, शायद वही चीज, वही आग और वही जो एक फौजी एटीट्यूड की कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, वो मुझे यहाँ ले आई। मैं जब विडोज या कोई इंडियन आर्मी पर्सनल या उन अथॉरिटीज, उनके साथ बातचीत करता हूँ, पहले बताता हूँ कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं। Many a times I've encountered people abusing me, especially the family, saying that where were you all these years? Then they realize that I'm not the official armed forces personnel who's reaching out, and I'm just doing it as a philanthropic measure. And many a times bureaucracy takes over, and forms, and they don't understand the situation or the urgency of the next of kin and the families. And then that's when you need to have. I follow a couple of mantras myself, and one of the key mantra is control the controllables. This is being taught to me by my friend, who's also an honorary lieutenant colonel in the army, and many people would know him as a cricket captain, former cricket captain of India, MS Dhoni. And he is something that I've learned from him, that is control the controllables. You do what you can. You cannot control कि armed forces authorities क्या करेंगे या बाकी लोग क्या react करेंगे. आप कैसे उस process को approach कर सकते हैं. और दूसरा जो चीज मैंने उन्हीं से सीखा है वो है process में आप ध्यान दीजिए. Keep, if your processes are right, the results more or less will come out correctly. Out of 100 times, there will be a couple of times when it won't come out well. But if you don't follow the process, then you will find that many a times you'll get frustrated.
So if you are following the process right, so मेरा clear है, अभी इतना 3 साल हो गया ये करते करते, अभी मेरा process बहुत strong हो गया, you know. डीपीसी हमारे सोसाइटी में ना बाय नेचर वी इंडियंस आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव। आप रात को दौड़ने जाएंगे, लोग बोलेंगे रात को क्यों जा रहा है यार, साइकिलिंग करने जाएगा ट्रक वाले ने ठोक देना है तेरे को, स्विमिंग करने जाएगा डूब जाएगा यार तू, ठीक है। So what happens is we are brought up in a very conservative society, not only the girls or boys or whatever, generally. So when you step out of your comfort zone, and most importantly when you fail, everyone looks down at you and everyone treats you like a oh. I still remember when the job did not work out हैदराबाद में, कई लोगों ने मुझे कॉल किया, बोला यार तेरे को बताया था ना यार, तूने क्यों बहुत छोड़ा, बताया था तू क्यों हैदराबाद गया, बताया था उस भरोसा नहीं करना है। ऐसे भाई कोशिश किया है, नहीं हुआ है, और कुछ देखेंगे, ठीक है। बट हमारी सोसाइटी में वी आर ऑलवेज लुकिंग हीरोज, सक्सेसफुल स्टोरी। वी डू नॉट रियलाइज फेलियर इज एज मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू स्पर यू ऑन। इफ यू अंडरस्टैंड फेलियर बेटर, इट टीचेस यू थिंग्स मच बेटर देन victory.